Jai Hind students, now welcome in our Tirupati International School, class 9th and subject biology, chapter number 1, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सॉरी मतलब सेल. ठीक है, आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो. तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर. तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स. क्लियर. और टॉपिक लो, लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्लास्टिड का डिस्कस किया था, लेकिन आज हम प्लास्टिड के पूरे टॉपिक विद द नोट्स. क्लियर. व्हाट प्लास्टिड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मीन प्लास्टिड, एंड दे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. क्लियर. Okay, what is the meaning of chloroplast, what is the meaning of the chromoplast, with the examples. Clear. So in this chapter the most important topic बेटा हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटर्स, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, इसके इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर्स. मतलब ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं. क्वेश्चंस मोस्टली 80% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और बाकी रिमेनिंग सेल वॉल है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंस बिटवीन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. क्लियर. बट यू फोकस इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एट द सेल ऑर्गेनल्स इन दिस चैप्टर. क्लियर. सो नाउ टुडे वी डिस्कस प्लास्टिड्स. तो बेटा प्लास्टिड क्या होता है? यू नो दैट आपने कभी देखा फ्लावर्स का कलर कैसा होता है? सभी फ्लावर्स जैसे रेड कलर के होते हैं, कुछ पिंक्स, वाइट. ओके. तो उसमें किस पिगमेंट की वजह से उनका कलर ऐसा होता है? ठीक है, हमें इतना पता है कि पॉलिनेशन के लिए वो जो कलरफुल प्लास्टिड होते हैं इसके अंदर, तो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? ठीक है. क्लियर. तो आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट यू राइट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिड. तो प्लास्टिड आर द सेल ऑर्गेनल्स found only in the plant cell. Okay, so first important top characteristic in this plastid are the cell organelles only found in plant cell, absent in animal cells. Okay, cells but absent in animal cell. Clear. Okay. तो बेटा फर्स्ट सबसे पहले दे हैव ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बट नो क्रिस्टी. फर्स्ट प्लास्टिड नाम किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने नेम डिस्कवर किया था? ठीक है. तो फर्स्ट APW स्किम्पर, SCHIMPER, इस साइंटिस्ट ने प्लास्टिड नेम दिया था, उसने इसका डिस्कवर किया था. द टर्म प्लास्टिड फर्स्ट टाइम इन 1885. क्लियर. ठीक है. नाउ इन थर्ड पॉइंट दे क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज. प्लास्टिड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ठीक है. तो जो मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट. तो नाउ प्लास्टिड आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. Divided into 3 categories. First, leucoplast. Second, chromoplast. And third, chloroplast. Okay. So first point, ल्यूकोप्लास्ट. देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है?
These are colorless pigment. Leucoclass colorless pigment होता है. They found the store starch grain. क्लियर, उसका मेन फंक्शन होता है स्टार्च को स्टोर करना, स्टार्च ग्रेन्स एंड ऑयल ड्रॉप्स. तो ल्यूकोप्लास्ट दीज आर colorless plastid and which is present that you can say with no any pigment. इसमें कोई भी pigment नहीं होता है कलरफुल, no any pigment, and they form store स्टार्च ग्रेन्स. तो बेटा उसका मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, देखो कोई कलर नहीं है इसमें, कलरलेस है. ठीक है, नो एनी पिगमेंट, बट द मेन फंक्शन दे स्टोर स्टार्च ग्रेन एंड ऑयल ड्रॉप्स. ओके, क्लियर. एंड नाउ सेकेंड, क्रोमोप्लास्ट. देखो ना, क्रोमो, उसके क्रोमो दैट मीन्स उसके वर्ड से पता चल रहा है. क्रोमो दैट मीन्स दीज आर कलरफुल पिगमेंट अदर देन द ग्रीन. दीज आर colored pigment या colored plastid. Clear? They contain several pigment. उनके बहुत सारे बेटा पिगमेंट होते हैं उसमें. They contain several pigment and usually found in cell tissues color the part of flower. मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो फ्लावर्स के कलर्स होते हैं पिंक, वाइट, है ना, या रेड, तो वो किसके वजह से? क्रोमोप्लास्ट. मतलब उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं. किसमें? सेल टिश्यूज के अंदर. ठीक है, सो दैट द पार्ट ऑफ फ्लावर्स. क्लियर? ओके, अंडरस्टूड. नाउ इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट. तो देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट, द ग्रीन कलर प्लास्टिड अकर. प्लास्टिड अकर्स विच कंटेन विच ओनली क्लोरोफिल. मतलब अगर जो ग्रीन पिगमेंट है उसमें सिर्फ ओनली ग्रीन पिगमेंट होता है. ठीक है, सो you can say the cell leaf tissues. Clear? तो देखो बेटा, प्लास्टिड they are divided into two part. So the three part, leucoplast, chromoplast and chloroplast. Leucoplast that means colorless pigment, मतलब इसमें colorless नहीं होगा. And the main function of the leucoplast that means the store starch grain and ऑयल ड्रॉपलेट. क्लियर? ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टार्च को, ग्रेन को स्टोर करना एंड सेकंड ऑयल ड्रॉपलेट्स को. क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट दैट मीन्स कलरफुल पिगमेंट. उसमें बहुत सारे कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लावर्स के कलर होते हैं, कई बार रेड होते हैं, पिंक होता है, वाइट कलर्स होते हैं. तो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट. ठीक है, क्लियर. एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट. उसके प्रेजेंस से क्लोरोप्लास्ट में फूड फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर, ग्रीन कलर दिखता है लीफ का. ठीक है, तो प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से. क्लियर? सो नाउ इज दैट क्लियर? द थ्री टाइप ऑफ द प्रेजेंट इन द प्लांट, ओनली दीज प्लांट्स, थ्री टाइप प्रेजेंट ओनली इन द, यू कैन से प्लांट सेल. सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं. ठीक है, तो बेटा एक मैं जस्ट डायग्राम बना देती हूँ. व्हाट इज डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सेल. यू सी,
These are thylakoids. Clear? So now this is known as the granum, stroma, एंड यू सी अगर बेटा मैं इस पार्ट का सिर्फ अलग डिफरेंट डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो इट इज़ द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल, मतलब ये पूरे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. क्लियर? और अगर मैं इसमें जस्ट एक इस पार्ट का, ठीक है, डायग्राम बनाऊँ, सो यू सी दिस स्ट्रक्चर लाइक these known is thylakoids. मतलब उसके पूरे होल पार्ट को इट द बंच ऑफ द थैलाकॉइड्स नॉन इन द ग्रेनम, लेकिन आप अगर एक सिंगल उसको करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम थैलाकॉइड्स कहते हैं. ठीक है, क्लियर? एंड इट इज द लेमिला ऑफ स्ट्रोमा. क्लियर? ओके, सो नाउ इन दिस पॉइंट प्लास्टिड में बेटा देखो, प्लास्टिड में जस्ट हमने एक बात किया था, तो प्लास्टिड में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका क्लोरोप्लास्ट का. तो क्लोरोप्लास्ट का मैंने डायग्राम बनाया, मतलब पूरा एक जस्ट लाइक द बंडल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन द ग्रेनम. अब उस ग्रेनम से एक एक पार्ट को डिवाइड किया, दैट इज नोन इज द थैलाकॉइड्स. क्लियर? अब यू कैन से दैट द क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. उसका मेन क्या होता है, फूड बनाना, फूड फॉर्मेशन इन द प्लांट्स. Clear? You can say the chloroplast is the kitchen of the cell. In which plant cell. Plant cell में इसका kitchen of the cell भी कह सकते हो chloroplast को. Clear? And now each chloroplast remains surrounded by the two lipoprotein membrane which together consist of the chloroplast envelope. मतलब इसमें two type is, you can say this two membrane होती है. Clear? And the envelope has no pores, surround space filled with the colorless matrix called the stroma. Clear? इसमें जैसे colorless fluid that is known as the stroma. Clear? ठीक है? And you can say this the double membrane. Okay, clear? So now in the plastid, the first topic, they are cell organelles found only in the plant cell, absent in animal cell. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि which cell organelles absent in animal cell. ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है. जस्ट प्लास्टिड, तो प्लास्टिड सिर्फ किस में होता है, ओनली प्लांट सेल में. And which scientist discovered P.W. Schimper and the term plastid in the 1883. Clear? Okay. And now plastid, they are divided into three parts: leucoplast, chromoplast and chloroplast. Leucoplast, these are colorless plastid with no any pigment. The main function of the leucoplast, that the starch of the grain, and the oil drops, मतलब स्टोर करता है. And third, chromoplast, that the many pigments present in color pigment. Okay, so several pigments, so part of the flower, the different type of the part of the flowers which occur in the different species. Clear? And now
chloroplast is the most important part, so that is known as the kitchen of the cell in the plant cell. Clear? And the green plastid occur in this pigment in the leaf cell tissues. Clear? Sorry, leaf cell tissue. Clear? And you see the diagram of this, the chloroplast with the double membrane. Clear? And bunch like structure, that is known as the granum, and each granum present in the thylakoids. Clear? Okay, and double layer of colorless fluid matrix present in this inner side, that is known as the stroma. Clear? And this double membrane which is covered in the chloroplast, and chloroplast is the main function in the photosynthesis. They make the food for the plant. Clear? Okay. And now you see the stroma contain DNA, ribosome and several enzymes. देखो बेटा, स्ट्रोमा में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं, ठीक है. एंड एंजाइम्स, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा. जो भी डार्क रिएक्शंस होती है वो आगे बेटा आगे आएगी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन इन द हायर क्लासेस. बट सिर्फ इतना ही रखो याद आपके भी, डार्क रिएक्शन किस में होती है? Dark reaction photosynthesis only occur in stroma. Clear? And the stroma contain a number of flat members, that is known as the granum, जो हमने डिस्कस किया है. ठीक है? Clear? And the granum are the sac of the vesicles thylakoids present in this. 14 to 100 granum होते हैं एक के अंदर. क्लोरोप्लास्ट में 14 to 100 granums present होते हैं. ठीक है? So now you see the pigment of enzyme of the light reaction photosynthesis is found in the grana. Clear? So what is the meaning of grana? What is the meaning of stroma? What is the meaning of thylakoids? Clear? And stroma, that means you can say the colorless fluid which is present in this double membrane inside in this. Clear? And what is the function of chloroplast? What is the function of chromoplast? And what is the function of leucoplast? Clear? So you can say that the point, the stroma contains DNA, ribosomal and enzymes. Clear? Okay. And chloroplast usually contain 14 to 100 chloroplast usually contains 14 to 100 ग्रेना. ठीक है? तो बेटा क्लोरोप्लास्ट एटलीस्ट कितने होते हैं उसके अंदर ग्रेना? 14 to 100 ग्रेना. Clear? Okay. So now in our next lecture we will discuss about Golgi apparatus, vacuoles. Clear? उसके बारे में जानेंगे. Lysosomes, centrosomes. Clear? बट आप बेटा आज जो मैंने प्लास्टिड्स कराए तो प्लीज़ आप अभी तो जितने भी सेल ऑर्गन्स बनाए, प्लास्टिक, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, आप उसके जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो आप करेंगे. ठीक है? तो होमवर्क तो आप लोगों को इतना जरूर करना है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज द फंक्शन, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? माइट्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एटीपी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीसोम विच इज प्रेजेंट इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया. सो ऐसे टाइप से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स. क्लियर? ऐसा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज द मेन, व्हाट इज एक्सप्लेन द प्लास्टिड. तो आपको पूरा प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड करके विद डायग्राम क्लोरोप्लास्ट एक्सप्लेन करना इन द 3 मार्क्स क्वेश्चंस. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं बेटा. ठीक है? सेल ऑर्गेनल्स में. क्लियर? तो सपोज
1 marks में दिया, राइट द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इन द 1 मार्क क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्लियर, या डिफरेंट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तो डिफरेंस से पूछ सकते हैं आपको। तो इट इज़ आपको जैसे टॉपिक आपने क्लियर कर लिया तो कैसे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं 1 या 2 मार्क्स में, क्लियर। अगर आपके 1 एंड 2 मार्क्स में क्वेश्चंस क्लियर हो गए एंड ऑब्जेक्टिव, तो डेफिनेटली 5 मार्क का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप पूरा उसको अटेंड विद परफेक्ट डायग्राम पढ़ सकते हैं, क्लियर। या ओनली आपको ये डायग्राम दे दिया, लेबल इट, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट डायग्राम दे दिया, आपको यहाँ पे एरो करके इसको लेबल कीजिए, तो इट्स परफेक्ट दैट यू कैन डू इट, क्लियर। सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जितना बेटा कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग ऑब्जेक्टिव फटाफट कर सकते हो, क्लियर। सो साथ साथ में आप लोग ऑब्जेक्टिव्स भी करते रहिए, साथ साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करते रहिए, क्लियर। जैसे प्लास्टिड आ गया तो प्लास्टिड में कैसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मेटिकल टॉपिक है तो कितने कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो ये डेफिनेटली यू अच्छे से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज द 9th इज द बेस ऑफ द 10th, क्लियर। 9th का बेटा क्लियर है डेफिनेटली अच्छे से, तब 10th भी अच्छी तरह से कर सकते हो। तो नाउ इन दिस, जैसे सपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्वेश्चन है, द स्ट्रोमा कंटेंट डीएनए, तो स्ट्रोमा में क्या बना होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, एंजाइम्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द, एंड क्लोरोप्लास्ट यूजली कंटेन द 40 to 100 ग्रेना, क्लियर। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर we discuss Golgi apparatus and vacuole, clear. So now thank you student, goodbye.